Hello students, we are starting a new topic which is principle of conservation of angular momentum. We have already derived a formula of angular momentum. Angular momentum is denoted by capital L and the formula that we derived was I omega. I was the moment of inertia and omega was the angular speed. Now I have written the statement of principle of conservation of angular momentum. But before going to this statement and understand this principle, we need to understand some basics of 11th standard. Okay, so first I'll take all those things, and when you keep all these things in your mind, then definitely this principle can be very well understood. Okay, so first of all, I'm taking Newton's second law of motion. So Newton का second law क्या कहता है? Newton's second law states that rate of change of momentum, rate of change of which momentum? Linear momentum is directly proportional to force. Is directly proportional to force. अब इसका formula derive करेंगे from this statement. So change of momentum. I hope you understand. When I write change of momentum, it has to be always final momentum minus initial momentum. Okay. So here I will be writing linear momentum, and this is final minus initial. Then when you come across the word called as rate, rate आया मतलब definitely इसको divide by time करना है, okay, and it is written directly proportional to the force, that is F. A momentum का formula, if you remember, it is nothing but mass into velocity, correct? So when I write final momentum, it has to be mass into final velocity. When I write initial momentum, it has to be mass into initial velocity divided by time, and this is directly proportional to force. Okay, then I can take common m as common. Okay, so that is how I will get v minus u by t. Okay, that is fine. Now what I am going to do, final momentum को मैं p2 से denote करता हूँ. So let us write p2 is your final momentum minus p1 initial momentum divided by time and directly proportional to force. Got this? Now try to understand. अगर force का value 0 है, let's assume if f value is taken as 0, so यहाँ पर 0 आ जाएगा. So time फिर 0 से multiply होगा. So ultimately वो भी 0 हो जाएगा. So our next step will be p2 minus p1 is equal to 0. So p2 comes equal to p1. So इसमें से क्या समझ रहा है? From this law we understand कि अगर force का value 0 है, okay, then this final momentum will become equal to initial momentum if force value is 0. ये concept को थोड़ा ध्यान में रखो, ये use होगा इधर. Okay, then this whole term can also be written like this. Please keep that in mind. dp by dt directly proportional to force. Okay, dp, that is change in momentum. Okay, and this is the small change in time. So ये term को ऐसे भी लिख सकते हैं, dp by dt directly proportional to force. Let's move on to the next part. Next part we need to study is the formula of torque. Torque का formula याद रखो. It is nothing but R cross F. ये भी 11th standard में सीखा था हम लोग ने. Secondly, R is nothing but the distance of the point from that perpendicular axis, okay, around which it is rotating. जहां पर आपने वो point पे force apply किया है, उधर से distance from the perpendicular axis of rotation. ठीक है? And this can also be termed as position vector if the motion is circular. I hope you remember in this chapter itself. अगर motion circular है तो ये position vector भी बोला जाएगा. And ये भी आपको ध्यान में रखना है कि dr divided by dt, जब आप position vector को derivate करते हो, so what you get nothing but velocity. This also you need to keep it in mind. Next part is that you need to keep it in your mind is regarding cross product of two same vectors. जैसे
समझ लो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का. ओके, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एज वेलोसिटी. सो इसका आंसर क्या आएगा? द आंसर टू दिस विल कम एज 0. अब उसके पीछे लॉजिक क्या है? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. क्रॉस प्रोडक्ट है तो sin थीटा आता है, सो आई विल राइट v sin थीटा. नाउ ये दोनों वेक्टर सेम है मतलब दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन. सो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो आप समझ जाओ वो पैरेलल लाइंस हो गया, तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? डेफिनेटली 0. सो दैट इज हाउ आई कैन राइट v sin 0 and that is you will get as 0. So ये चीज भी ध्यान में रखो to understand this principle. One last thing that I need to tell you is from derivatives. Okay, uv rule of derivative. समझ लो d by dx of uv you are doing. Okay, derivative chapter मैथ्स में पढ़ा होगा. इसको डेरिवेट कैसे करते हैं? We first of all write u as it is. We derivate the v term. Then we write plus and we write as it is and derivate the u term. Okay, so ये भी आपको पता ही होगा. So these all things you need to keep it in your mind if you want to understand this principle. Okay, fine. So let's proceed for the principle finally. Okay, so what is written? Angular momentum is conserved in absence of external unbalanced torque. इसका मीनिंग क्या है? कंजर्व्ड का मीनिंग क्या है? कंजर्व्ड का मीनिंग है कांस्टेंट रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहेगा. एक कंडीशन है टॉर्क शुड बी 0. सो इन शॉर्ट आई कैन राइट दिस एज इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 देन L विल रिमेन कांस्टेंट. अब ये थोड़ा लिंक करो जो अभी मैंने यहां पर सिखाया था इन न्यूटन सेकेंड लॉ. उसमें कैसा था? अगर फोर्स 0 आता है, ओके, देन P2 becomes equal to P1. ऐसा ही कुछ यहां पर भी है. फोर्स के बदले यहां पर टॉर्क 0 है, तो क्या होगा? L2 will be equal to L1. So that I can write that is L is constant means L2 equal to L1. इसका और सिंपल मीनिंग यही है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम should come equal to initial angular momentum. So ये हुआ इसका सिंपल मीनिंग. अब हमको ये प्रूव भी करने का है. ओके, सो लेट्स गो फॉर प्रूविंग दिस. वी नो द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज r क्रॉस p. ओके, एंगुलर मोमेंटम और ये लीनियर मोमेंटम. अब हमको करना है इसको डेरिवेट. ओके, so I derivate this with respect to time. Okay, with t. So next step will be d by dt r cross p. अब ध्यान दो, ये हो गया अपना uv रूल. जस्ट नाउ आई टॉट यू. सो क्या करते हैं uv रूल में? पहले u लिखा जाता है. चलो मैंने r लिखा. डेरिवेट करेंगे हम v को, ठीक है, प्लस वी विल राइट v दैट इज p and derivate करेंगे किसको? u को, that is r. Now start applying whatever I taught you before this principle. I can write dp by dt from Newton's second law can be written as equal to force. I hope you understood this. Okay, and then here p, अच्छा p का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग. What is the formula for p? Mass into velocity, like this. Got this? And I told you position vector divided by time करोगे, so that can also be written as velocity. We have a cross sign in between this, like this. Here also we have a cross sign this way. I hope यहाँ तक clear हो गया है. Okay, I repeat once again. Newton second law से dp by dt force लिख सकते हैं, dr by dt velocity होता है, and momentum का formula mass into velocity. Now let's come to the next part. LHS में है dl by dt. ये देखो r क्रॉस f टॉर्क का फॉर्मूला बन गया है. सो यहाँ पर टॉर्क आ गया, प्लस ऑब्जर्व दिस पार्ट v क्रॉस v. ठीक है, इसका आंसर क्या आया था? 0. ओके, सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद dl by dt is nothing but equal to टॉर्क. नाउ अगर मैंने टॉर्क का वैल्यू 0 कर दिया,
if torque is equal to 0. So therefore dl by dt will also become equal to 0. ठीक है, यहाँ टॉर्क का वैल्यू 0 पुट कर दिया. अब इससे क्या समझ में आता है? नाउ dt will go that side, get multiplied with 0, so वो 0 ही रहेगा. And what is dl? याद करो न्यूटन से सेकंड लॉ में dp, what was dp? dp was actually p2 minus p1. I hope you understood. So ये जो टर्म है वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, L2 minus L1 divided by time is equal to 0. ये टाइम इधर आके मल्टीप्लाई होगा, so my next step will be L2 minus L1 equal to 0, and then I hope you understood, we got finally as L2 equal to L1, and that is what I had written in the law. देखो, we should get L2 equal to L1 under one condition, which was torque equal to 0, and वही मैंने assume किया था. So this is how finally this principle of conservation of angular momentum is proved. Thank you. So let's take the application part of this principle of conservation of angular momentum. Okay, we are going to consider two applications. First is while diving in a swimming pool. कुछ competitions होता है जिसमें swimmers height से jump मारते हैं, and while they fall down into the swimming pool, उसके बीच में, okay, what they do, they try to roll over completely, okay, and they try to make some movements, and उसके ऊपर उनको points मिलते हैं. So let's try to understand how they are able to do. उसमें कहीं ना कहीं ये principle use होता है. Okay, so L का formula आपको पता है, it is I omega, angular momentum का. So therefore L divided by I is equal to omega. What does this mean? कि ये दोनों inversely proportional है. Okay, एक चीज समझ लो, constant है, angular momentum constant है, and these two are inversely related. So जब swimmer को dive मारना है, ऊपर से jump करना है, what he will do, उसको अपना पूरा angular speed increase करना है, because उसको roll over होना है, correct? He wants to do roll over, rolling motion करना है. So what he will do, he will try to increase its angular speed, so that he gets more point. ठीक है, अब ये increase करना है तो ये decrease करना पड़ेगा, moment of inertia. अब moment of inertia का concept तो आपको पता ही है, it is equal to mass into square of the distance from the axis of rotation. So swimmer के body का जो axis of rotation है उससे पार्टिकल्स नजदीक होने चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा. सो अगर कोई स्विमर है ऐसे खड़ा है, ओके, व्हाट विल हैपन, यहाँ उसके हैंड में जो भी मास है उसका डिस्टेंस उसके एक्सिस से तो दूर हो जाएगा, सो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, एंड इफ दिस गॉट इंक्रीज, अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा एंड एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज, ज्यादा मूवमेंट्स नहीं हो पाएगा. सो व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू ब्रिंग his whole body very nearer to the axis. Okay, वो सिकुड़ जाएगा ऐसे. I hope you understood this. Okay, he will bend his hand near the axis, he will bend his head, he will bend his legs, एकदम बॉल के फॉर्म में वो अपना बॉडी बना देगा, and then you can observe कि उसका angular speed बढ़ जाता है. So what he is doing actually, he is decreasing moment of inertia by bringing everything like hands, legs, head nearer to the axis. वो अपने आप को एक sphere के फॉर्म में बना देते हैं. Okay, so this is the concept behind diving in the swimming pool, so as to decrease moment of inertia. Let's move on to ballet dancers. Ballet dancers का भी competition होता है. Okay, while skating they have to make rotations, कुछ acrobats परफॉर्म करने होते हैं. अगेन द सेम थिंग, उनको उसके ऊपर पॉइंट्स मिलता है कितना टर्निंग हो पा रहा है. सो व्हाइल दे वांट टू टर्न, आप कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, दे विल नेवर मेक टर्न्स बाय स्प्रेडिंग देयर हैंड्स, नेवर, और होगा भी नहीं. अगर वो लोग स्प्रेड करके टर्न करेंगे, सो हार्डली 2-3 रोटेशंस वुड बी पॉसिबल. सो व्हाइल दे वांट टू टर्न, they will definitely again bring their hands closer like this or very close like this. Okay, so that what is going to happen, उनका जो mass distribution है body का, वो सब axis of rotation के नजदीक आ जाता है. So ultimately they are decreasing this value of r, and उससे moment of inertia भी decrease होता है and ultimately angular speed increase होता है. Okay, so once you have studied this, definitely you should watch
some sports where this acrobats are performed. ओलंपिक्स में आप देख सकते हो, स्विमिंग पूल का भी डाइविंग कंपटीशन देखो, एंड डेफिनेटली आपका ऑब्जर्वेशन यही रहेगा, फिजिक्स कैन नेवर गो रॉन्ग. Okay, so this was the application part of principle of conservation of angular momentum.